राजीवः मल्होत्रा अस्ति अयं तादृशो जनः येन संस्कृतं तदाधृतं भारतीय इतिहास प्रख्यापनपरं प्रायः असङ्गतं प्रतिपतः विधीयमानं व्याख्यानादिकं विदलय्य अथ पूर्वाग्रही पाश्चात्य विचार पृष्ठपङ्के साग्रहं पौर्वात्यसुरभिसमन्वितम् आत्मानम् आविर्भूय स्वीयं राजीवनाम विद्यते निःसंशयम् अन्वर्थीकृतम्। केन नु संस्कृतानुरोधिना तद्विरोधिना वा न ज्ञायेरन् राजीवरचितानि बीइंग डिफरेंट, ब्रेकिंग इंडिया, द बैटल फॉर संस्कृत सदृशानि सर्वतः प्रथितिपथप्राप्तानि पुस्तकानि। तेन तु स्वीयायासमात्रेणैव विरोधिमतमतान्तरं भृशं समालोच्य ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीय मंचादिषु विविध सम्मानं समर्ज्य अद्यावधि कथमिव उन्नीतम् उन्नीयमानं च विद्यते संस्कृतम् इति चर्चास्पदत्वं भजमानः अयमिह राजीव मल्होत्रा सहकृतः विशिष्टः संवादः। वस्तुतः भवांस्तु पूर्वतः अभियान्त्रिकी विशेषज्ञः, कुशलोद्यमी अथ मीडियादि विशिष्टसेवा क्षेत्राणाम् अनुभवी अपि वर्तते। परं ततः संस्कृतं प्रति भवदीया रुचिः कथं वृद्धा? ततश्च द बैटल फॉर संस्कृत, बीइंग डिफरेंट, ब्रेकिंग इंडिया, इंद्राज नेट इत्येतादृशानि पुस्तकानि भवता कथं प्रणीतानि? भारतीय संस्कृति के दो कुरुक्षेत्र हैं। एक तो कुरुक्षेत्र है अंदर ही, आपस में ही लड़ाई हो रही लोगों की। एक और कुरुक्षेत्र है विदेश में, विराट कुरुक्षेत्र, जिसको ग्लोबल डिस्कोर्स कह सकते हैं। उसमें हमारी जो संस्कृति है उसको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ट्रांसलेशन गलत की जा रही है और उसके अगेंस्ट काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा जा रहा है कि ये जो संस्कृति है ख़राब है। तो ये जो दूसरी वाली संस्कृति की कुरुक्षेत्र है, जो ग्लोबल डिस्कोर्स है, हम उसमें काम कर रहे हैं। तो उसमें काम करने के लिए पहले तो हमको दूसरों के बारे में पूर्व पक्ष करना है कि वो लोग कौन हैं, क्या उनका इतिहास है, क्या फ़िलॉसफी है, क्या पॉलिटिकल थॉट है, क्या उनका एजेंडा है, और उसके अनुसार उनको पहचानना है। तो वो समझने के बाद फिर हमारे शास्त्र क्या लिखते हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारे विचार क्या है हमारी संस्कृति के साथ, इन दोनों को समझने के बाद हम उनको जवाब दे सकते हैं। पहले पूर्व पक्ष फिर उत्तर पक्ष। ये लेकिन जब जवाब देते हैं, हम जवाब सिर्फ पेन ये कीबोर्ड से नहीं देते, हम सामना करके देते हैं। हम उनके पास जाकर उनसे बातचीत करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। और इसी के कारण 5-10 वर्ष ऐसे काम करने के बाद फिर एक पुस्तक निकलती है। सो माई वर्क इज़ एनकाउंटरिंग विद द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, रिप्रेजेंटिंग आवर संस्कृति इन ए पॉजिटिव वे, इन ए वेरी नाइस वे, ऑथेंटिक वे। बीइंग डिफरेंट अर्थात वैभिन्यं, विभिन्नता वा इत्याख्यस्य भवदीय प्रथितपुस्तकस्य कस्मिंश्चित् अध्याये भवता 8,100 तादृशाः भारतीयाः सांस्कृताः वा शब्दाः संकलय्य उपन्यस्ताः वर्तन्ते, येषां वस्तुतः आङ्ग्लानुवादः इति न कर्तुं शक्यते इति भवता एवं प्रतिपादितं वर्तते। आङ्ग्लानुवादकेभ्यः अथ आङ्ग्लभाषिभ्यः भावत्कः कः सन्देशः एतस्मिन् प्रसङ्गे? The non-translatable word will protect us from losing our culture, because जो translate हो गया word, that word is useless because you replace it. You don't need to say pran anymore, you can say breath. You don't need to say agni, you can say fire. So you agni becomes useless. It is no use, it is the same word. This way we are losing our vocabulary. By saying that this is not translatable, we preserve that word. We do not let it go because there is no English word like that. Second reason is, by introducing these Sanskrit words into the English language, my strategy is Sanskritization of English. I want to Sanskritize English. So I am saying let people speak English. Some people will speak Sanskrit, very few, but most people will speak English, at least for the next generation. I want to introduce Sanskrit words for them, make Sanskrit vocabulary part of the English language, not translatable. And this is what I am calling Sanskritization of English. This is very original idea. भवान् संस्कृतानुरागी, वस्तुतः तत्रापि विशेषतः संस्कृतोपकारी, न परं संस्कृतभाषी इति वर्तते भवन्तम् उद्दिश्य संस्कृतपारम्परिकाणां विदुषां कश्चन बृहान् आक्षेपः। कथमिव पश्यति भवान् ईदृशीम् आक्षेपस्थितिम्? It is true, I am not a Sanskrit speaker.
Huh? And I'm very happy that many other people are Sanskrit speakers. We need good Sanskrit speakers. My Swadharm is my Swadharm. Somebody else has got a different focus. जो हमारा काम है उसके लिए I have to read thousands of pages of very serious English work, very serious English language, scholarship, philosophy, history, all kind of things. I have to understand Marx and Freud and postmodernism, post-colonial studies. I have to understand all that, and I do understand that. संस्कृतं भारतीयसंस्कृतिं च समाश्रित्य शेल्डन् पोलाक्, वेण्डी डोनिगर् सदृशैः पाश्चात्यबुद्धिजीविभिः अथ देवदत्तपट्टनायकादि भारतीयवक्तृभिः विहितानाम् उद्धृततथ्यानां समालोचनाक्रमे भवता संस्कृतस्य प्रथितोपस्थापनरीतिमनुसृत्य पूर्वपक्षः, उत्तरपक्षः, ततश्च सिद्धान्तपक्षः अथवा निर्णयः इति विषद्यते। अस्मद्दर्शकेभ्यः एकम् उदाहरणं, कमप्येकम् उदाहरणं प्रदर्श्य सिद्धान्तपक्षस्य स्वरूपं कृपया स्पष्टयतु। One example is Wendy Doniger looks at lingam and looks at Sri Ramakrishna and Vivekanand and Krishna, and she finds sex everywhere. When in one place when Ramakrishna tells Vivekanand, please come sit on my lap, so she says it is a homosexual. He is having homosexual affair. So she is looking at it from Freudian Siddhant. It is not what our view is. She does not understand our culture. ये उनके विचार है. So ये इसीलिए इसी प्रकार से हम बहुत डिटेल में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करते हैं. ईदृशानां पूर्वपक्षाणाम् अथ भवदीयोत्तरपक्ष समन्वितानां सिद्धान्तानां संदर्भे द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ मेन इत्येतादृशानां पुस्तकानां किं भूतं स्थानम्? शेल्डन पॉलक की जो पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ मेन, फर्स्ट पार्ट संस्कृत इज देव भाषा, बिल्कुल ठीक बोला, करेक्ट. बट देन ही सेज आफ्टर फ्यू पेजेस ही सेज इट एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ मेन, व्यवहारिका. सो ही सेज द परमार्थिका वी शुड रिजेक्ट. ओके, बट वी डोंट रिजेक्ट. व्हेन द देव भाषा एंटर्स योर लाइफ एंड माय लाइफ, we don't reject the Dev Bhasha. It is still Dev Bhasha, but I use practical way. I use it for practical thing, but I don't forget the Dev Bhasha. It is still the language of the gods, while it becomes also in the world of men. It is not one or the other, it is both together. So when he says it's now Sanskrit is the world of men, so what he means by that? He means it has to be used by leftist social scientists. It is a way to, you read Shastra to find out where they are discriminating, why, what is the hidden meaning, how Ram is exploiting Sita. This is the kind of vichar in this book. भवेन्नाम ब्रिटिश पार्लियामेंट रूपं प्रथितस्थलं USA UK इति तत्रस्थं बौद्धिकं पटलम् उत भारतीय चिन्तकवर्गसम्बद्धः भारतीयः वैश्विकः वा मञ्चविशेषः सर्वत्रैव भवतः धर्मयोद्धृरूपेण कीर्तिः वर्तते. परं भारतीयसंस्कृतिसमुन्नायकेन भवता तत्र तत्र कीदृश्यः प्रतिक्रियाः अवाप्ताः? ठीक है, दिस इज वेरी गुड. ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमने दो घंटे का हमारा प्रोग्राम हुआ था. उन्होंने हमको इनवाइट किया था. उसमें कंजर्वेटिव एमपीज भी और लिबरल एमपीज भी, दोनों पार्टीज के एमपीज आए थे. तो उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की कि ये जो हमने आइडियाज़ दिए हैं, ये आइडियाज़ ऐसे ओरिजिनल आइडियाज़ हैं. आई हैव ट्राइड टू रिप्रेजेंट भारतीय संस्कृति वर्ल्ड वाइड, और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग हमको सहायता दें. एंड आई वॉन्ट टू से दिस वंस, if I were a Chinese person doing it for China, the whole government would be helping me. If I were an Arabic person, the king of Saudi Arabia would give me lot of money कि अरे वाह क्या कर दिया आपने. हाँ, any other civilization, a person like me doing this work for 25 years would be considered very important and they would help him. So here I am doing this on my own. I will continue doing this on my own because this is my Swadharma. श्रीमन्, एवं सुबद्धं तथ्यान्वितं च भवदीय प्रतिपादनं नूनम् आह्लादकरं प्रातीयत इति आकलय्य भवत्कृते अर्पयामि प्रभुतं धन्यवादम्. धन्यवाद.